प्रॉपर ट्रांसडेंटल प्रसाद वितरण प्रोग्राम की जाए, हरिनाम संकीर्तन की जाए, इस्कॉन खारगर की जाए, इस्कॉन खारगर भक्तवृंद की जाए, गौर प्रेमानंदे। All glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories Shri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This morning we are reading from Srimad Bhagavatam, canto number 7, chapter number 5, and the verse is 19. Tat enam guru gyatva, tat enam gurur gyatva, gyata jignya chatushtayam, gyata geya chatushtayam, daitendram darshayam asa, daitendram darshayam asa, matramrstam aklan alankritam, matramrstam alankritam, tat enam guru gyatva, gyata gya chatushtayam, daitendram darshayam asa, daitendram darshayam asa, matramrishtam alankritam, matramrishtam alankritam, tat enam guru gyatva, gyata gya chatushtayam, daitendram darshayam asa, matramrishtam alankritam.
microphone, Prabhu. Where's the temple commander of other brahmacharis? Mothers, anybody else? Word to word translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Tata thereafter. Enam him, Prahlad Maharaj. Guru, his teachers. Gyatva, knowing. Gyata, known. Gya, which are to be known. Chatursitayam, the four diplomatic principles. Sama, the process of pacifying. Dana, the process of giving money in charity. Veda, the principle of dividing. And Danda, the principle of punishment. Daitya Indram unto Hiranyakashipu, the king of the Daityas. Darshayam Asa, presented. Matra Mrishtam, being bathed by his mother. Alankritam, decorated with ornaments. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. After some time, the teachers, Sand and Amaraka, thought the Prahlad was sufficiently educated in the diplomatic affairs of pacifying public leaders, appeasing them by giving them lucrative posts, dividing and ruling over them, and punishing them in cases of disobedience.
Then one day, after Prahlad's mother had personally washed the boy and dressed him nicely with sufficient ornaments, they presented him before his father. Kindly repeat after me. After some time, the teachers, Sanda and Amarak, thought that Prahlad Maharaj was sufficiently educated in the diplomatic affairs of pacifying public leaders, appeasing them by giving them lucrative posts, dividing and ruling over them, and punishing them in the cases of disobedience. Then one day, after Prahlad's mother had personally washed the boy and dressed him nicely with sufficient ornaments, they presented him before his father. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. यहाँ पर कितने हिंदीवासी हैं और कितने लोग इंग्लिश समझते हैं? हाँ, yes. हिंदीवासी हैं मगर इंग्लिश समझते हैं. कोई चिंता ही नहीं है फिर. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. It is essential for a student who is going to be a ruler or king to learn the four diplomatic principles. There is always rivalry between a king and his citizens. Therefore, when a citizen agitates the public against the king, the duty of the king is to call him and try to pacify him with sweet words, saying, "You are very important in the state. Why should you disturb the public with some new cause for agitation?" If the citizen is not pacified, the king should then offer him some lucrative post as a governor or minister, any post that draws high salary, so that he may be agreeable. If the enemy still goes on agitating the public, the king should try to create dissension in the enemy's camp. But if he still continues, the king should employ argumentum ad baculum, severe punishment, by putting him in jail or placing him before a firing squad. The teachers appointed by Hiranyakashipu taught Prahlad Maharaj how to be a diplomat so that he could rule over the citizens very nicely. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmitam Yenai Tasmai Shri Guruve Namah. Namam Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyati Deshitarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauradase Namah. Namo Brahmane Devaya
Go Brahmahitaya cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kante Radha Kante Namaste Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Hari Priya Vanchakalpadrubhyasya Kripa Sindhuvevacha Patithanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. It's a wonderful topic, Srimad Bhagavatam, explaining about the upbringing of Prahlad Maharaj. And every child needs this upbringing, either demonic or divine. So, before we would like to talk about today's topic, would like to highlight the life of a wonderful sannyasi, Gaur Govind Swami Maharaj, who was part of this movement and one of the strongest preachers of Sanatan Dharma. And Gaur Govind Maharaj was a very strict, wonderful devotee, and he was born in Orissa, near one of the villages of Jagannath Puri. And he was, from his childhood, he was inclined of getting early in the morning at 4 a.m. He was practicing spiritual life from the young age. And most of this time, he stayed with maternal grandfather, whose name was Giri. And they were all great, wonderful Vaishnavas. So they trained Gaur Govind Swami Maharaj very nicely in spiritual knowledge. And he emerged as a wonderful student. He did in his college BA and B.Ed. He was a teacher, he was a headmaster. But there was no inclination for him to get married. And he had a desire that he should meet, he was born in 1929, 2nd September. Okay? And in Jagannath Puri, small village near the Jagannath temple. So, maternal great father was a wonderful Vaishnava, and as a child, Gaur Govind Swami was very quiet, very submissive, and was executing devotional service from the young age very, very sincerely. And there was a very big character in his life that while sleeping, he would always read the Bhagavatam, and then he will leave the Bhagavatam on his chest. So, 1952, his mother arranged a marriage, and he educated himself, from Utkal University of Orissa. And then since 1973 itself, there was a great desire in his heart that he would like to take sannyas. Though he got married in 52, but in 73, he wanted to get renounced. He wanted to take sannyas.
And you will be very happy to know that he left 1974 his family. As I said in the morning, he kept on traveling, and he kept on traveling till he met His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada in Vrindavan. And the moment he met him, he said, "Do you have a desire to take sannyas?" The moment Prabhupada told him that you have a desire of taking the sannyas, Gaur Govind Swami Maharaj recognized that he is my spiritual master. So Gaur Govind Maharaj got sannyas from Prabhupada, and then he was allowed to go to preach in Orissa, and he struggled with making a temple in Bhubaneswar, and it took lot of time. As I said in the morning, he was staying in a small hut, thatched roofed hut in the highway. Whoever has gone to see that temple there, or his Bhubaneswar temple, he had a small hut, and there was a Prabhupada Murti and himself. And Srila Prabhupada also visited him in 76. Srila Prabhupada visited in his place. And practically he had no place to stay, but still Prabhupada stayed with him in that place. Seeing his renounced postures and dedication, he stayed in that place. So officially, I remember 87, I went to Bhubaneswar and assisted him for 3-4 months in raising funds for the temple. So by the mercy of the Lord, in 1991, the temple was inaugurated, and thus the whole, wonderful, temple was opened. And he, in 85 also, he went to Western world, because Srila Prabhupada had told him to go to Western world and spread the more and more Sanatana Dharma. And he was very, very successful. He had wonderful preaching tours. He would tour all over, and he was a very, very powerful speaker. And in his credit, there is a Gopalju Publications, who used to, print many books, magazines, and so many things. He had a printing press also, where he started Oriya books printing in the place itself. So we used to have a wonderful association with him. He would come to Bombay, deliver many lectures, very powerful lectures. And I have personal special bond with him, because he used to love me and he engaged me in his service. We used to hear wonderful lectures whenever he would come to Bombay. And then in, I think, this is the, appearance day of Gaur Govind Swami Maharaj. And, he was a very powerful preacher. Very, very powerful preacher. शास्त्र संपूर्ण रूप से इन एंड आउट जानते थे. बहुत समय तक उन्होंने शास्त्र का बहुत अध्ययन किया, और बचपन से ही वो सभी ग्रंथों को
जानते थे, बहुत ग्रंथों को अध्ययन भी करते थे. So this was his wonderful forte. And I will always miss him because I adored him as a preacher, and he was a wonderful sannyasi. He gave a wonderful opportunity for me to also help in that temple, and he used to visit, my Juhu home whenever he was in Juhu. So we had an opportunity of hosting him in our house also. So it's rare to find such sannyasis, very much dedicated. And then ultimately he left in Mayapur, midst of big festival. Haribol. So ISKCON is very proud of such sannyasis who have been very, very strong preachers and all over the globe. So also we are also going through Chaturmasya. I don't know whether you all know the importance of Chaturmasya. You see, first month we don't take milk, second month we don't take yogurt, greeny leaves. Second month is curd, and then last month is उड़द. से ये कोई ऐसा फैशन नहीं है फास्टिंग करने के, जैसे आजकल लोग शरीर को पतला बनाने के लिए फास्टिंग करते हैं, या जैन लोग फास्टिंग करते हैं. ये वो ऐसा फास्टिंग करने का कोई ये नहीं है. ये 4 मंथ जो है, ये स्पेशल मर्सी है भगवान की तरफ से अपने जीवन की प्यूरिफिकेशन करने के लिए. आहार शुद्धि, इसको कहते हैं आहार शुद्धि. जब तक हमारे जीवन में आहार शुद्धि नहीं होगी, तब तक बुद्धि का विकास नहीं होगा, और जब तक बुद्धि का विकास सही ढंग से नहीं होगा, तब तक हम शास्त्र अध्ययन नहीं कर पाएंगे, और जब तक शास्त्र अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो हमारे आध्यात्मिक जीवन का विकास नहीं हो सकता. आध्यात्मिक जीवन के अंधकार में बहुत कुछ होता है. लोग सोचते हैं कि मैं आई एम स्पिरिचुअल, बट ही इज नॉट रियल स्पिरिचुअल. He has not no knowledge about शास्त्र. He has not read the Vedic शास्त्र. भाव है, कनेक्शन है, भक्ति सुसुप्त अवस्था की है, मगर उसको मालूम नहीं कैसे चलाना. How to dovetail it, how to study the shastras. Like, lately we have developed a big disease calling Sai Ram. Huh? Sai Krishna. This is bloody nonsense. राम और कृष्ण के साथ में एक मुसलमान का नाम जोड़ रहे हैं आप, साई राम साई राम करके. And this was completely going on in the whole Maharashtra, whole India. It was going on. A meat eater born in Afghanistan just came to India for a purification, and we have made him Bhagwan. This is Ajnanata. How can you see that the Muslim is connected with the Ram and Krishna? Huh? This is nonsense. And everybody is talking about Sai Krishna, Sai Ram. Huh? So you will be very happy to know that they have also won the court case. The Shankaracharyas of the South, they have won the case, and they have unearthed this whole nonsense that we have started calling Sai Ram and Sai Krishna and all that stuff. And they have won it, and they have proved that he came from Afghanistan. He was a Muslim, born Muslim. He was a meat eater.
and so on and so forth. So we have to cling to the Vedic Shastra. Until unless we don't cling to our Vedic Shastra, हमारी अज्ञानता वैसे की वैसे ही रहेगी, वैसे की वैसे ही रहेगी. भागवत छोड़ दिया हम लोग ने, व्यासदेव को छोड़ दिया, ग्रंथों को छोड़ दिया, रामायण छोड़ दिया, महाभारत छोड़ दिया, हमने न्यो भगवानों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया. So this is what is to be condemned by every Hindu on the planet Earth. So we have a Bhagavatam. नित्यम भागवत सेवया. हर दिन हमें भागवतम पढ़ना है. हा? इस भागवतम के द्वारा ही हमारे जीवन में अंधकार दूर हो सकता. शास्त्र पढ़ने से ही हमारा जीवन सुधर सकता है. तो वर्तमान स्थिति में हम प्रहलाद का चरित्र पढ़ रहे हैं, और प्रहलाद के चरित्र में हम जो लोग 7 दिन नहीं आए, उस पे थोड़े कुछ श्लोकों पे आगे प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे. सयद अनुवर्ता पुंसाम पशु बुद्धिर विविध्यते अन्य एष तथा अन्यो अहम इति भेदा गता सती. जब भगवान भक्त पे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति में तीव्रता होती है, समर्पण होता है, एंड ही बिकम्स अ पंडिता. और पंडिता का मतलब ही है वो समदर्शी हो जाता है. समदर्शी का मतलब ये है कि वो भेदभाव नहीं करता है. इसलिए वो दोस्त और दुश्मन में भेदभाव नहीं करता, काला और गोरे में भेदभाव नहीं करता, फिरंगी और भारतीय का भेदभाव नहीं करता, क्योंकि वास्तविकता में उसने समझ लिया है कि हम जीवात्मा हैं. उस स्तर पे जब हम संपूर्ण रूप से अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन का संचालन करते हैं, तो उस वक्त कोई हमारा दुश्मन नहीं रहता है और हम पंडिता हो जाते हैं. प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहां पर राक्षस जो है वो दोस्त और दुश्मन में भेद करता है. हिरण्यकशिपु के हृदय में ये चिंतन मनन हो रहा है कि प्रहलाद में ऐसी भावनाएं कहां से पैदा हुई जो विष्णु को अपना दोस्त मान रहा है. क्योंकि विष्णु तो मेरा भाई का और मारा हुआ है, और ये कौन सा है कि जो वो विष्णु से प्रेम कर रहा है. उसको भी मेरी तरह दुश्मन होना चाहिए, मगर वो दुश्मन नहीं है, वो विष्णु को अपना दोस्त मान रहा है. ऐसी शिक्षा और ऐसा बुद्धि उसके पास कहां से आया. मगर प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि जो भक्त रहता है वो कभी भेदभाव नहीं करता है, वो समदर्शी कहलाता है. वैष्णव जो है समदर्शी होता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है. He is always friend of everybody. In that platform, he can, talk about Krishna consciousness, talk about Krishna consciousness to every person on the planet Earth. That's why he travels around the globe. What is he doing? Jare dekho, tahe kaho, Krishna upadesh. He is not fearful. He is
Abhay, he is fearless. He wants to preach Krishna consciousness around the world, and nobody's his enemy. Okay? He doesn't waste his time because the materialistic people keep on creating communities, nations. They divide, keep on dividing. Even the kings divided many races. That's how they rule. All that stuff is happening. So a devotee should see the personality of God to be situated in everyone's heart, and should also see every living entity as an eternal servant of the Lord. हम सभी भगवान के दास हैं. जब वैष्णव ऐसी आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके दिल में भी यही धारणा होनी चाहिए कि हम सभी भगवान के दास हैं. जब तक जीव माया दास है तब तक वो समझ नहीं सकता इस भाव को. इसलिए वैष्णव अपने पर्सनल स्थिति को जोखिम में डालते हुए भी परहित के लिए कार्य करता है. दैट्स वैष्णव. So Prabhupada ji says in this, Hiranyakashipu asked Prahlad Maharaj how he had become antagonist to his family. So जब हम जानते हैं कि प्रहलाद महाराज के फैमिली में उसका चाचा मारा गया. आज आपने देखा होगा बिहार, उत्तर प्रदेश, कई स्थानों पे ये दुश्मनी चली आती रहती है. और इसी दुश्मनी के अंतर्गत बॉलीवुड में बहुत से स्क्रिप्ट्स भी लिखे गए. दो गांव वालों के बीच में बहुत राइवलरी है. Isn't it? You have seen this whole thing happening, and it is happening in sometimes even those who claim to be Vaishnavas also. I don't want to mention those stories. It may be very, very discouraging. Sometimes we have seen on the Zar Zameen and Joru, these three things are there. The people fight for what? Land. They fight for the lady. They fight for the inherited properties. Okay? So this is all the root cause of ignorance. This is root cause of the fights. And in villages, they keep on fighting like that. What to speak of going back into the Satyuga and seeing that Hiranyakashipu is surprised that how Prahlad is not an enemy because his uncle has been killed by Vishnu. So for a demon, this is a very big surprise. मेरा बच्चा क्यों नहीं उसका दुश्मन है? मगर उसके हृदय के सभी अलंकृत, जो बचपन से अलंकृत कार्य थे, वो तो निकल ही गए, क्योंकि एक शुद्ध भक्त ने उनके जीवन में हस्तक्षेप कर दिया. और उस शुद्ध भक्त ने भगवान के गुणानुवर्धन की लीलाएं सुनाई. That is why it is said, by hearing Nityam Bhagavata Sevya, by hearing the transcendental, pastimes of the Supreme Personality of Godhead from a pure devotee, it can churn your materialistic heart away. And this is quite evident from all of us, our lives, previous lives, other senior devotees' lives. This is the pramanam, prataksha pramanam, that केवल भगवान के गुणानुवर्धन सुनने से हमारे भौतिकता का जो हृदय है संपूर्ण नष्ट हो जाता है और हम जीवन में
सदाचार करते हुए अच्छे भक्त बन जाते। ये केवल भगवान के लीलाओं को सुनने से संभव हो सकता है। Of our own, it has not happened. It is the intervention of a devotee, just like Narada intervened in the life of, Kayadu, and Prahlad, though he was in the womb, he was transformed from a demonistic propensities to divine propensities, which can be always adored by the great acharyas and even the supreme personality of Godhead. When he came as Lord Chaitanya Mahaprabhu, he always heard these wonderful pastimes of Prahlad Maharaj and Dhruv Maharaj. आप देख सकते हैं कि भगवान के भक्त का चरित्र कितना भगवान को भी प्रिय है। वो सदैव उनके लीलाओं का रसास्वादन करना चाहते हैं। कभी कभी तो भगवान की कृपा से बढ़कर भक्त की कृपा है। भगवान से बढ़ के भक्त की कृपा है। एक दृष्टांत देता हूं। दृष्टांत ये था कि एक भक्त था तो राम जी ने उस भक्त को बोला कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये भक्त बड़ा ही भयभीत हो गया। वो ढूंढने लगा कहां जाऊं। तो अल्टीमेटली नारद जी के चरणों में गए। बोले कि ये जो भगवान ने शपथ लिया है कि वो मेरे को मार डालेंगे, मैं क्या करूं? तो बोले तुम मेरे पास क्यों आए? जाओ, तुम चले जाओ हनुमान जी के पास, और हनुमान जी के पास चले जाओ और उनके चरणों में गिर जाओ और उनके चरण इस तरीके से पकड़ो कि वो छूटे नहीं। तो उन्होंने ऐसा ही किया। वो चले गए और हनुमान जी के चरणों में लिपट गए। बोले हनुमान जी मेरे को अपना आश्रय दे दीजिए। अरे ये क्यों, मेरे चरणों को क्यों आप लिपट रहा है? बोले कि राम जी ने शपथ लिया है मेरे को मारने के लिए, मैं तो आप ही का पुजारी हूं, मेरे को आप अपने चरणों में रखो। तो वो छोड़े नहीं। तो दूसरे दिन देख रहे हैं कि राम जी आए और अपने बाण के साथ, इससे पहले कि वो बाण के साथ उनके ऊपर प्रहार करे, हनुमान जी ने अपना गदा उठा दिया। है? हनुमान जी ने गदा उठाया तो उन्होंने देखा ये पहली बार ये हनुमान जी मेरे सामने गदा लेके खड़े हुए हैं। तो बोले हनुमान ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले ये भक्त ने मेरे चरणों में आश्रय लिया है, आप उनको मार नहीं सकते। हैं? आप उनको मार नहीं सकते। तो इस तरीके से राम जी ने अपने धनुष वापस ले लिया और वो भक्त बच गया। एक देखा गया है कि कभी कभी भगवान से भक्त बड़ा पावरफुल हो जाता है और कभी कभी गुरु से चेला भी पहलवान हो जाता है। So it is proved that devotee's mercy is much stronger at times than the Lord himself. So we see here that Prahlad is a wonderful devotee. He has been saved by none other than Narada Muni.
and Narad Muni's recitations of the wonderful pastimes of Krishna made Prahlad Maharaj to get soaked in these wonderful pastimes, and he became stronger and stronger and stronger. And that's how the demonic propensities evaporated. So Prabhupada ji says that Sarvasya chaham hriday sanvinishto matta smritirjnanam apohanam cha. Lord is situated in everyone's heart, giving dictation attitude of the servant. However, the Lord gives different dictation to the non-devotees and the devotees. The non-devotees challenge the authority of the Supreme Lord, and therefore the Lord dictates in such a way that the non-devotees forget the Lord's service, life after life, and are punished by the laws of nature. But when a devotee is very sincerely serving the Lord very nicely, जब भक्त जो है भगवान की अच्छी तरीके से सेवा करता है, तो भगवान क्या बोलते हैं भागवत गीता के 10वें स्कंद में, तेषाम सतता युक्तानाम भजतम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते. So, to those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. Everyone is actually a servant, not an enemy or a friend, and everyone is working under the different directions from the Lord, who directs each living entity according to his mentality, according to his samarpan, according to his own dedication. As Krishna says also in some other places in Sloka, ye yatha mam prapadante tam tathai bhajamyam. So we must dedicate ourselves in such a manner so that we can transcend these situations in our life and go back home, back to God. That's what we have to do. Persons who always think of enemy and a friend are unable to ascertain the super soul within themselves. जो भी भक्त लोग कभी कभी सोचते हैं ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, वो कभी भी भगवान को समझ नहीं सकते. Okay? Not to even such exalted person as Brahma, who are fully conversant with the Vedic literature, वो शास्त्र से संपन्न है ब्रह्मा जी, वो भी sometimes get bewilders, वो भी bewilder हो जाते. इसलिए आप कभी कभी आप देख सकते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान ब्रह्मा जी का क्या स्थिति हो जाता. इसलिए प्रहलाद महाराज बता रहे, उसी व्यक्ति ने मुझे ये बुद्धि प्रदान की कि मैं आपके दुश्मन के बारे में ऐसा सोचूं. क्योंकि हिरण्यकशिपु सोच रहे हैं कि प्रहलाद का बुद्धि कैसा हो गया उनके दुश्मन के प्रति, क्योंकि प्रहलाद का जो जीवन चरित्र है उभरता हुआ, इट्स ऑल प्रोग्रेसिव लाइफ इन स्पिरिचुअल लाइफ. ही इज ट्रांसेंडिंग ऑल दीज थिंग्स. He has gone, he has become a bhakta now. He's become devotee, and devotee has got all the qualifications of a demigod. A devotee has got all the qualification to understand who is Krishna, the Supreme Personality of God. Krishna gives matta smriti jnanam apohanam cha. भगवान उनको ये शक्ति प्रदान कर देते हैं जिससे कि वो समझ सकते हैं कि वास्तविकता में क्या करना चाहिए. Sometimes, भौतिक संसार के जीव जो है, इट इज विदाउट, अकल्पनीय है उनके सोचने के लिए कि भक्त कैसा सोचता है. बिकॉज भगवान इज गाइडिंग सच डिवोटीज. सो इट इज सेड, O Brahmanas, an iron attracted by a magnetic stone moves automatically towards the magnet. My consciousness, having been changed by his will, is attracted by Lord Vishnu,
who carries a disc in his hand that I have no independence. कौन बोल रहा है ये? प्रहलाद महाराज क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? ध्यान से सुनो, आप लोगों ने तो, आप तो साइंस के स्टूडेंट होंगे। हाँ, मैट्रिक में तो 8वीं क्लास में तो लेबोरेटरी में जाते थे, तो वहां पर मैग्नेट भी होता था, आयरन के टुकड़े भी होते थे, isn't it? तो जहां पर मैग्नेट होता है वहां पर आयरन के टुकड़े ऑटोमेटिकली सरक के उसके साथ, चुंबक के साथ चले जाते हैं, isn't it? Isn't it? बोलते हैं जब भक्त जो है भगवान के प्रति वैसे ही आकर्षित हो जाता है जैसे कि लोहे के टुकड़े चुंबक के साथ किसी तरीके से भी जुड़ जाते हैं, उनका कोई इंडिपेंडेंस नहीं होता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है। और जिस जीव के अंदर में भगवान के प्रति भगवत भक्ति उमड़ आती है, वो भगवान के साथ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है। उसके लिए उसको पूछना नहीं है, उसका वैकेबलरी नहीं है, बट ही इज अट्रैक्टेड टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड बिकॉज हम जो है भगवान के क्या है? अंश हैं। अब सवाल यह है कि माया जगत में रहने के बाद में हम अपना संबंध भूल जाते हैं, मगर इसी माया जगत को लांघने के लिए जो भक्त जो है परिपक्व भगवत भक्ति में निपुण हो जाता है, वो इस माया जगत के प्रति कोई आकर्षित नहीं होता, वो माया जगत के जो निर्देशक है उसके प्रति आकर्षित हो जाते। He is not attracted to this material world. He is attracted to the creator of the material world, the supreme personality of God. And that's how his constitutional position gets revived. He becomes a servant of the Lord. The moment he gives up his tendency of lording over the material things, he becomes attracted to Krishna. Srila Prabhupada says, one who is completely immersed in hearing these topics of Krishna consciousness, he will get attracted to Krishna and he will not be attracted to the material world. Why we are so much entangled in the material world? Because we have not increased our devotional service very, very nicely. And those who have been perfectly situated in devotional service, the journey, their attraction for Krishna is very strong, unflinching faith, which is not mixed with materialistic desires, which is not mixed with conquering on material things, which is not mixed with anything else. So that's why Prabhupada says, Teisham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadhami buddhi yogam tam enamam upyantate. Bhakti ka ye result hai. But we are tossing ourselves in the different tastes and temperaments of material world, trying to adjust ourselves, sometimes eating burger and sometimes eating dosa, sometimes eating sandwich and sometimes eating nonsense. Because we have not even conquered our tongue, what to speak of our belly and what to speak of our genitals. We are loitering between these three things. Yes or no? Tell me. We are always tossing between these three things. ये जीवा जो है हमारी शत्रु है और दोस्त बनी ही नहीं. हाँ? अब बताइए, even Dikshit Bhakta, I'm asking everybody, who has controlled the tongue? Tell me. प्रसाद के रूप में बहुत कुछ खाते. हाँ, इसीलिए चतुर्मास, प्रभुपाद जी बता रहे चतुर्मास करना चाहिए. ये हमारी जीवा को शुद्धिकरण कर देता है, हमारी चेतना को भी शुद्धिकरण कर देता है, क्योंकि आहार से विचार आते हैं. अगर आहार की शुद्धि नहीं है तो विचारों की शुद्धि कहां से होगी?
ये कोई इमोशनल सेंटिमेंटल माइथोलॉजिकल गेम नहीं है। बट ऑल हिंदूज रास्कल्स दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। चतुर्मास क्या होता है? आप बताइए किसको बोलेंगे आप? ये तो इस्कॉन के आने के बाद ही हमको पता चला चतुर्मास। यस प्रभु। हाँ, अब बताइए ना, बताइए कौन हिंदू बताएगा बचपन से चतुर्मास करता था? चाहे साउथ इंडिया का पंडित हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का पंडित हो, चाहे राजस्थानी पंडित हो, कोई पंडित नहीं करता था। किसी को मैं मालूम नहीं। धन्य है प्रभुपाद, धन्य है इस्कॉन, जिन्होंने ये शिक्षा प्रदान कर दी है। देह की शुद्धिकरण चतुर्मास से शास्त्र में लिखा गया है। देह की शुद्धिकरण चतुर्मास से होती है। जब 4 महीने में एक चीज छोड़ोगे तो कुछ तो असर पड़ेगा ना भाई। हाँ? इसीलिए वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स। अगर हमें इस भौतिक संसार से लांघना है, हमें नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। गुरु की आश्रित जाने के बाद में अपने स्वभाव, अपने करिकुलम पे कंट्रोल प्राप्त करना होगा। जीवा पे, उधर पे, और कंट्रोल नहीं है। आप कितना भी 30 मार खान क्यों ना हो, पतन होने वाला है। भले ही तुम डंडा लेके भी घूमो, बड़ा बड़ा तिलक लगाओ, कुछ नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना? हमारे बीच में था ना आसाराम। आपके सामने जीते जाते एग्जाम्पल हैं कि क्या कैसे पतन करवा देते हैं जीव का भगवान। मोर का पंख सर पे लगा के है? You see, we have to quote, even if we don't want to quote a person who has gone so degraded in situations. After narrating the pastimes of Krishna from the Bhagavatam, but making himself like a Krishna, क्या खामी क्या है? खामी ये है कि शुद्ध भक्त नहीं है, अभी भी वो इंद्रियों के स्तर पे है, काम वासना है, लस्ट, ग्रीड, एनवी। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया? श्रीमद् भागवतम के चौथे श्लोक में, 10वां, चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, वीतराग भय रोग क्रोध, है ना? एक श्लोक में भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, और दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि 4 चीजों पर कंट्रोल होना चाहिए, वही मेरे धाम में चला जा सकता। तो ऐसी लोगों पे हम लोग जो देख रहे हैं, वो लोग भगवत धाम नहीं जा सकते। तो आपका कहना भी होगा, अरे प्रभु जी आप भी तो कभी कभी क्रोध कर रहे, मगर पागलपन की तरह नहीं। पैसा किसी ने चोरी लिया, मंगल आरती नहीं आया, प्रसाद ही खा रहा है, सेवा नहीं कर रहा है, दिन भर सो रहा है, तो कैसा मैं सादा बन जाऊंगा, ऐसा देखता रहूंगा? I cannot be just a silent spectator. Just like a father cannot see his son becoming prodigal, a temple president has to see every person, every angle, everything. भगवान का पैसा चोरी तो नहीं हो रहा है, भिक्षा का पैसा चोरी तो नहीं हो रहा है, कोई सो तो नहीं रहा है, मायाग्रस्त तो नहीं हो रहा है। सो क्रोध तो करना पड़ता है। हाँ, स्वार्थवश क्रोध नहीं होना चाहिए।
क्या कर रहे हैं आप? मन तो वैसे ही अटकन में है, हाथों को क्यों छटका रहे हो? Why to do this? Why to do this? But yes, there should not be any malice in the heart. And if there is an iota of a malice, then there's a possibility you will fall down. But you cannot just do whatever you feel like. People come here, sit down outside, watch mobile. Do we mean to say I will sit quiet in the temple and see them watching all Bollywood movies sitting inside the garden? Mera bus chale to I will slap them on their face. Don't use this parisar for just doing mobiles. भगवान के सामने भी तो भगवान का एक नजर देख रहे, मोबाइल पे हाजिर देख रहे. This is all a big disease. So somebody has to become bad man. Isn't it? We have to inculcate the principles of pure culture in our society, which is derailed. Bollywood has derailed our consciousness. Materialistic endeavors have derailed our pure consciousness. We get completely polluted, and we don't know even how to guide our children on towards the divine cause. Because we have a praloban in our heart, we have materialistic propensities in our heart, and we think that if मैंने बच्चे को बीएड करवाया, IT बनाया, now he should take care of me. This is all a materialistic exchange and enjoyment. But our business is to talk about Prahlad Maharaj. Our business is to talk about Srimad Bhagavatam, so that we can purify our Krishna consciousness very, very nicely and help others to become devotees. How dare people are completely becoming animals, Prabhus? So it's very essential to keep on talking about Krishna consciousness. And just contrary to the affairs of Vrindavan in the material world, where no one is attracted by Krishna and everyone is attracted by Maya. This is the difference between spiritual and material world. Hiranyakashipu was in the material world and was attracted to women and money. Hiranyakashipu means gold and comfort. As long as you are attracted to gold and comfort, the name means Hiranyakashipu, correct? So Prahlad said, because of being unnaturally unattracted by Krishna, Hiranyakashipu therefore needed purification. Yeah? So we all need purification. That purification process is chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. When you are all attracted to the materialistic propensities in your Lord, in your heart, you will keep on lording over the material things. You will want to have more and more things in your life. But in spiritual life, this is not advisable. So then great Saint Narada Muni continued, the great soul Prahlad Maharaj became silent after saying this to his teachers, Sanda and Amaraka, the seminal sons of Shukracharya. These so-called Brahmins then became angry at him because they were servants of Hiranyakashipu, and they were very sorry, and to chastise Prahlad Maharaj they spoke as follows, because these teachers were all Brahmanas but controlled by Hiranyakashipu, though they were sons of Shukracharya, seminal Brahmanas. Seminal Brahmanas are all materialistic. If you are not having a real
qualification of a Brahmana, then you will be under the influence of money. Just like the Kali Yuga, Brahmanas go nowadays to the houses, kuch bhi bolo, kuch bhi karo, dakshina de do. Huh? Isn't it? They go to the houses, they don't teach them what is real culture. उनको दक्षिणा पड़ी है, बाबा दक्षिणा दे दो. So this is a Brahmana's work to ask for the alms, but what is happening? They're asking for their own sense gratification. When a Brahmana is completely forgotten the dependence on Krishna, rather he is depending on the demonistic propensities of Hiranyakashipu, the sun and Makarand have become tattoos. बाड़े के टट्टू बन गए दोनों, और इसलिए अब ये गुस्सा हो गए कि प्रहलाद महाराज उनको शासन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो गुस्सा हो गए. Isn't it? This rascal किसको बता रहे हैं? प्रहलाद महाराज को. ये दोनों टीचर्स प्रहलाद को क्या बता रहे हैं? This rascal Prahlad has appeared like a thorn tree in the forest of sandalwood. ध्यान से सुनो, क्या हो दृष्टांत. कभी कभी आप लोग सोचते होंगे दृष्टांत कहां से अच्छा मिले, ये भागवत पढ़ो, आपका रोंगटे खड़े नहीं हो जाएंगे तो नाम जी. क्या बोलते हैं कि चंदन की वाड़ी में ऐसा पेड़ कहां से उगा जो कांटे जैसा है. कांटे की जाड़ में से कुल्हाड़ी का डंडा बन जाता है. ध्यान से सुनिए आप, क्या ये सुंदर दृष्टांत है. To cut the sandalwood tree, an axe is needed, and the wood of the thorn tree is very suitable for the handle of such an axe. Lord Vishnu is the axe for cutting down the sandalwood forest of family of demons, and this Prahlad is the handle for that axe. आज जो है इस कुल्हाड़ी का डंडा है जो कि चंदन के वाड़ी में उत्पन्न हुआ है, और ये जो है कांटे का जाड़ है. तो प्रभुपाद जी हमको क्या समझा रहे हैं? Thorn trees generally grow in desert places, not in sandalwood forests. But the seminal Brahmanas, Sanda and Amara, compared the dynasty of Daita Hiranyakashipu to the sandalwood forest and compared Prahlad Maharaj to an hard thorn trees. Or my dear friends, when the devotees go on the roadside to do Harinam, this is the condition of the materialistic people. They think इनको टकले लोगों को क्या हो गया, ये क्यों सड़क में कीर्तन करते हैं, ये तो घर में भी कर सकते हैं. मगर उनको मालूम नहीं है, गुरु मुख पद्म वाक्य चितित कोरिना आज्ञा. गुरु की आज्ञा से, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से ये भक्त लोग सड़कों पे कीर्तन करते हैं, ताकि उन व्यक्तियों का जो विनाश हो रहा है, ये नाम ध्वनि सुन के उनके जीवन का काम बन जाए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम माया के मदहोशी में जब जीव पड़ा रहता है, उसको सोचता है कि हम ही पागल है. Isn't it? But actually, when a devotee is in complete sane situation, or rather in tandem personality of God, Sri Krishna, then he doesn't have to fear anything. Whether there is a sarcasm coming from spectators or anybody, he knows he's doing everything perfect. That should be the unflinching faith of a devotee who is determined to carry out the mission of Krishna consciousness without fear. And Sand and Amagrak, the teachers of Prahlad Maharaj, chastised and threatened their disciple in various ways and began teaching him about the path of religion, economics, development, and sense gratification. This is Dharma, Artha, Kama,
और मोक्ष की शिक्षाओं को प्रदान करने में दोनों जो टीचर्स थे उनको परिपक्वता से उनको प्रचार करना चाहते हैं। और फिर क्या बता रहे हैं कि after some time the teachers Sant and Amar thought that Prahlad Maharaj was sufficiently educated in diplomatic affairs of pacifying public leaders, appeasing them by giving them lucrative posts, dividing and ruling over them, and punishing them in cases of disobedience. तो इसमें प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर हमें वर्णन किया है कि जो भी इस भौतिक कार्य के राज्य वगैरह में काम करते हैं चलाने के लिए, उनको ये सब 4 गुण होना चाहिए। साम इज द प्रोसेस ऑफ पैसिफाइंग, जब भी कोई व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है किसी टाइम पे भी, तो हमें बड़े प्रेम से उसको पुचकारना चाहिए कि भाई क्या तकलीफ है। इसका बड़ा एग्जाम्पल हुआ हमारे गुजरात में, एक पटेल का दिमाग खराब हो गया। क्या नाम था उसका? हाँ, हार्दिक पटेल, करेक्ट ना? हार्दिक पटेल का दिमाग खराब हो गया, हुआ कि नहीं? तो उन्होंने ऐसा पैसिफाई कर दिया, अभी हार्दिक पटेल जी स्वामी क्या हो गए, अभी बीजेपी के मेंबर आगे हो गए। पहले कितना रैलीज किया उन्होंने, क्या किया? तो जो कुशल नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं अपने फर्जंदों को लगा दिया उनके पीछे, और आज हार्दिक पटेल जो है पैसिफाई होके बीजेपी पार्टी में आ गए। जबकि हमको बोलना नहीं चाहिए इस व्यास आसन में, मगर ये हो रहा है, ऐसे ही हुआ है, isn't it? और दूसरी चीज क्या है? दान, द प्रोसेस ऑफ गिविंग मनी इन चैरिटी। जब किसी का भी दिमाग वगैरह खराब हो जाता है तो उसको बोलते हैं भाई थोड़ा सा उसको पैसा खिलाओ, है ना? ये संसार में, भौतिक संसार में ये ऐसी प्रथा चल रही है। आपका काम नहीं हो रहा है तो घूस दे दो, ये बड़ा प्रचलन है, ये शास्त्र का भी वर्णन है, तो घूस दे दो। ये तभी तक है जब तक जीव जो है भौतिक संसार में घुसा हुआ है। ये साम दंड भेद ये सब करना पड़ता है। और भेद, द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइडिंग, किसी को भी भेज देते थे उसको डिवाइड कर देते, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में अभी हुआ लेटेस्ट, सब ये आपको रेफरेंस पता चलना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या हुआ? सब 30-40 शिव सैनिक जो है, ध्यान से सुनिए, बिकॉज यू मस्ट नो व्हाट्स हैपनिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। 30-40 शिव सैनिक्स हैव बीन divided. Why? They were not complying with the teachings of Balasaheb or Hindutva. Real, actually. They are criticizing. I'm not saying this. They were criticizing that this government was completely appeasing the minorities, creating the dens in different places, allowing Bangladeshis to do business in Delhi, allowing Bangladeshis to do business on the streets of Bombay. So the other party got completely convinced. Shinde party got convinced, and he shifted 40 to this place because Mr. Sharad Pawar was openly propagating Muslims. And even Mr. what is his name, Uddhav Thackeray and sons, just to sustain on the seat, they were trying to appease. So what happens? The other person kya kiya? They divided the whole thing. So all the 40 are saying we are actual original. Isn't it? This is what is happening. और अगर कहीं मानता नहीं है तो फिर शूट एट साइड करके खत्म कर दो, ये शास्त्र बता रहा है।
अब उसका स्टोरी भी कहीं गुजरात में दिख रहा है. So these are all stories of the material world which you will see, but this is all reflecting in Shastra. Prabhupada ji is talking about. But for a devotee who has transcended all these situations, he is friend of everybody. He is wanting to make everybody Krishna conscious. And my dear friends, you must be proud. You all Hindus should be proud that recently it has been known that in Saudi Arabia there is a temple excavated which is 8,000 years back. So if we will not come to the senses, Krishna is making you to come into senses. There is no religion called Muslim religion. There is no religion called Sikh religion. There is no religion called Christian religion. There is no Jain, Buddha, nothing. All inferior religions below Sanatan Dharma, all going to get vanquished. And only thing is, we have to transcend the modes of material nature, go higher and higher and higher, and become devotees of the Supreme Personality of Godhead. And that is what Chaitanya Mahaprabhu is telling us. Harinama, 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 Kevalam Klonaste Vanaste Vagatiranatha. If we want to transcend all these materialistic sicknesses around, we must know real Bhagavad Dharma in our life. We must read the pastimes of Srimad Bhagavatam, and especially इस टाइम पे भागवत डिस्ट्रीब्यूट करना और भागवत पढ़ना. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ बता रहे हैं अभी कितने तारीख को भाद्र पूर्णिमा है? हाँ, 9th of September. 9th of the September, ISKCON is pushing everybody to read Bhagavatam, donate Bhagavatam, study Bhagavatam. मुसलमान को भी दे दो, क्रिश्चियन को भी दे दो, बोलो पढ़ो. ये सनातन धर्म का ग्रंथ है. हमको भागवत पढ़ना चाहिए. जब भागवत पढ़ोगे तब जाके अकल बुद्धि आ जाएगा. नहीं तो भौतिक संसार के स्ट्रगल में आपका अकल बुद्धि भी नष्ट हो गया है. इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते व गति न था. कलयुग में केवल नाम ही बहुत पावरफुल है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो भले ही हिरण्यकश्यपु के 2 टीचर्स ने प्रहलाद को ये सब शिक्षा दिया और वो समझ गए कि अब ये निपुण हो चुका है हमारे ज्ञान से, है? और फिर ये बच्चा अपने पिताजी के गोद में बैठेगा और बड़े प्रेम से उसका पिताजी पूछेगा, बच्चा तुमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या सीखा? तुमने इंग्लिश मीडियम में क्या सीखा? वो बोलेगा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं. और हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाएंगे, ये टीचर्स ने कैसा शिक्षा मेरे इस बच्चे को दिया है. वो तो बोलता है विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, मेरे को तो नहीं भगवान बोल रहा है. तो वहां पर क्लाइमैक्स स्टार्ट हो जाता है और उस क्लाइमैक्स के लिए तैयार रहिए. हम सब लोग सुनेंगे कि हमारा हीरो प्रहलाद महाराज कैसे विजयी बनेगा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. श्री राधा मदन भगवान की, निताई गौर सुंदर भगवान की, गौर प्रेमानंदे. आज क्वेश्चन आंसर का प्रश्न नहीं है. आज 10 बजे से मीटिंग है और जो भी हमारे कांग्रेगेशन डिवोटीज हैं आज उनके साथ हमारा हार्ट टॉक है और हार्ट टॉक है. HARD हार्ट टॉक एंड देन HEART हार्ट टॉक. Okay, so we'll not have question and answers today, so we'll have next Sunday. Okay, Shri Radha Madan Mohan Bhagavan ki, Nitai Gaur Sundar Bhagavan ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande. Who should give? Wow.
I can't give free. They were asking for free. I said, no. I would ask them to then only I told them, no. But I didn't contact them. I got their number. How can I give free? Yes, yes, yes. It's not so cheap. Yes. But they did come. Yeah, yes. Thank you. Thank you.